नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध, आप सभी का सिविल गुरुजी और स्वैग से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे आप लोग? होप ऑल ऑफ यू आर सेफ। सो एज आई हैव टोल्ड, आई एम हियर विद द मोस्ट एंटिसिपेटेड वीडियो फॉर द गेट 2023 सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स, दैट इज द टॉप 50 most expected topics for gate 2023 which you definitely need to cover. Already I have made one sample questions video and stuff actually for math apti part, and also some of the cases, some for some subjects subject wise videos, actually subject wise expected topic videos वो भी हम बना चुके थे. But this is actually definitely going to be, I would say, different. ये अलग है. And in this particular case, this 50 topics definitely you should cover. उसके अलावा आप जो भी कर रहे हो वो तो अलग बात है. For this kind of videos, definitely do subscribe to this particular channel, join our telegram channel, follow me on instagram. तो चलिए शुरू करते हैं. So let's start with the first topic. That is a brief introduction about me. Those people who don't know me, just a brief introduction about me. देख लेना वीडियो पॉज करके जो लोग मुझे नहीं जानते. सो टॉकिंग अबाउट योर बीएमसी एंड सीपीएम, स्टार्टिंग ऑफ विथ, राइट. क्योंकि आप मेरे बात क्यों ही मानेंगे, इसीलिए देखो इंट्रोडक्शन देने का पर्पस ये होता है कि सम पीपल दे डोंट नो मी, सपोज एंड क्या कौन है भाई तू तो इसलिए मैं थोड़ा बता दिया कि मार्केट में नया नहीं हूँ. So BMC is concrete, basically concrete के ऊपर conceptual questions. Therefrom also you can get some MSQ questions also, and mixed design based question. Conceptual question means they are, it can be also match the following type questions, depending upon the exposure condition and the nominal cover or effective cover to be applied, especially the nominal cover to be applied, or suppose the different kinds of concretes where their applications are, right. इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है. मिक्स डिजाइन बेस्ड क्वेश्चंस, they are mostly like, how they can be solved just like soil की तरह. soil में properties of soil जैसे करते हो आप, phases, 3 phase diagram बना के वैसे ही करना है बस. ये only the number of things are a little bit more over here. आपको पूछ लिया volume of air कितना है, something like that. Talking about CPM, there is construction planning and management. Their crashing is very important. You are going to get definitely a 2 marks question from it, or also the path diagrams actually, जिसमें कि आपको दैट वो लेटेस्ट फिनिश टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, राइट, वो वाला जो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम एंड अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ईएसटी, वो सब जो क्वेश्चंस है डेफिनेटली एक्टिविटी टाइम देख लेना एक बार. एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो एप्लीकेशन होते हैं इन द प्रोबेबिलिस्टिक पार्ट एक्चुअली ओवर हियर, दैट z इज इक्वल टू x माइनस म्यू बाई सिग्मा, सबसे जो क्वेश्चंस है डेफिनेटली देख लेना एक बार. टॉकिंग अबाउट योर स्ट्रक्चरल एनालिसिस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड जो है, स्टिफनेस कोएफिशिएंट एटसेट्रा दे कैन आस्क यू टू फाइंड आउट. And talking about your Castigliano's theorem, they can find out the deflection using the strain energy principle or something like that. Questions on Truss, they can also ask you. Finding out forces in different members or counting the number of zero force members, they can definitely give you. Stay tuned till the end of the video. I'm going to talk about topic wise, subject wise, how to prepare actually, and what are the weightages. I have actually dedicatedly made a video on that. आप गेट 2023 मोस्ट एक्सपेक्टेड ये जो प्लेलिस्ट में मैं डालूंगा इसको, उसमें आपको डेफिनेटली वो मिल जाएगा that what is the expected weightage of these topics as well. So I will add that video in the end screen, so वो भी देख लेना. Okay, so that you can get actually that what is the I would say time that needs to be devoted subject wise. क्वेश्चंस ऑन ट्रस्ट जैसे कि मैंने आपको बताया. टॉकिंग अबाउट योर जियोटेक, एज यू नो द हाईएस्ट वेटेज टॉपिक, जहां से यू कैन एक्सपेक्ट 13 to 14 मार्क्स. तो वहां पे पोर वाटर प्रेशर्स, किम्पटन्स पोर वाटर प्रेशर्स जो ए बी होता है, राइट, दैट पर्टिकुलर थिंग्स आप देख लेना. डिफरेंट इंडिसेस जो आपके होता है ना, लाइक टफनेस इंडेक्स, फ्लो इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, इस सब के जो 1 mark क्वेश्चंस यू कैन डेफिनेटली गेट. कंसोलिडेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. सेटलमेंट एंड टाइम फैक्टर से आप देख सकते हो क्वेश्चन 1 इज तो डायरेक्टली फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट सेटलमेंट्स. बेसिक्स उसका एक ही है, डेल्टा एच बाई एच नॉट इज इक्वल टू डेल्टा ई बाई 1 प्लस ई नॉट, बट उसको डिफरेंट तरीके से मॉडिफाई किया गया. टाइम फैक्टर इज डेफिनेटली वन ऑफ द थिंग्स. दोनों फॉर्मूला याद रखना गाइस, दैट इज टीवी इज इक्वल टू सीवी इनटू टी बाई डी स्क्वायर, एंड द सेकंड is if u is less equal to 60%, then it's pi by 4 u by 100 whole square, and 1.781 minus 0.933 log 100 minus u percent when u is more than 60%. दोनों ही फॉर्मूला याद रखना दोस्त. Okay, now talking about this other methods actually, that is if I talk about the permeability, I think you can see this particular thing actually. permeability मैं थोड़ा इसको देख यहाँ पे कर देता हूँ छोटा, ताकि आप इसको देख पाओ properly. So if I talk about like permeability, fluid mechanics में बाद में आ रहे हैं.
डिस्चार्ज एंड सीपेज वेलोसिटी बेस्ड जो क्वेश्चन है वो देख लेना, इक्विवेलेंट परमिटिविटी लाइक KH एंड KV बेस्ड जो क्वेश्चन है। एक चीज बहुत बहुत ध्यान रखना गाइस, जो जहां पे वो खेलते हैं एक्चुअली, लाइक यू नो ऐसे ऐसे वो कभी कभी लेयर्स दे देते हैं एंड ऐसे फ्लो दे देते हैं। सो नॉर्मली इट थिंक्स लाइक ओके फाइन हॉरिजॉन्टल फ्लो है तो आई हैव टू आस्क एंड आई हैव टू कैलकुलेट द KH, बट नो, here the flow is perpendicular to the bedding plane, so we have to calculate KV if asked to find out the equivalent permeability। ऐसे बहुत सारी चीजें। शैलो फाउंडेशन के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो इंक्लाइन एंड एसेंट्रिक लोडिंग, एक होती है इंक्लाइन लोडिंग के लिए, एक होती है एसेंट्रिक लोडिंग। एसेंट्रिक लोडिंग मतलब व्हेन द लोड इज नॉट पासिंग द सेंटर ऑफ CG, एक्चुअली आई वुड से सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द पर्टिकुलर बेस। मेयर ऑफ इक्वेशन एंड योर इंडियन स्टैंडर्ड मेथड जो है वो देख लेना फॉर कैलकुलेटिंग द बियरिंग कैपेसिटी। एक्टिव अर्थ प्रेशर कैलकुलेशन ऑफ टोटल लैटरल थ्रस्ट। यहाँ पे एक चीज देख लेना, फॉर सम न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस they are asking whether they are asking in kilonewton per meter or kilonewton, so from there you will get that actually जो आपको प्रेशर पूछा या फोर्स पूछा है, if pressure is asked then only you have to calculate this particular thing, मतलब ये जो है, and if they are asking about the thrust in kilonewton तो आपको इसका एरिया निकालना है, द प्रेशर डायग्राम का, राइट, प्रेशर डायग्राम का आपको एरिया निकालना है। आगे बढ़ते गाइस, that is pile capacity, they may ask finding out capacity through different methods actually। बहुत सारे जो डायनामिक मेथड्स स्पेशली वो भी एक बार मतलब देख लेना, जो डिफरेंट डिफरेंट सॉरी आपके जो अनकॉमन थोड़ा थोड़ा मेथड्स है, नो लाइक एक तो आता है आपका हिलीज फॉर्मूला, एक आता है आपका लैम्डा मेथड, देन योर इंजीनियरिंग न्यूज फॉर्मूला, ये सब जो थोड़ा है वो देख लेना। नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन कैलकुलेशन देख लेना एंड स्ट्रेस पाथ बेस्ड कैलकुलेशन देख लेना। ये सब कहां पे मिलेगा आपको ये सारे क्वेश्चंस, दैट आई विल टेल यू डेफिनेटली, डोंट वरी अबाउट दैट। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल राइट नाउ फॉर डेली अपडेट्स। फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में बात करूं तो इस बार यू नो फ्लूइड मैकेनिक्स कंबाइंड वेटेज इज अराउंड योर 9 मार्क्स गाइस। अगर मैं बात करता हूं इफ आई इंक्लूड द OCF पार्ट एज वेल, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में मेनली फ्लो फील्ड रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, यू नो लाइक स्ट्रीम एंड पोटेंशियल फंक्शन रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, लाइक यू नो साई फाई एंड ऑल दिस थिंग्स, मतलब u इज इक्वल टू माइनस डेल साई डेल वाई, सही बोलो ना, हाँ, v इज इक्वल टू डेल साई डेल एक्स, इस तरीके से, या फिर कोई भी वेलोसिटी को आप किस तरीके से वेक्टोरियली रिप्रेजेंट करते हो ना, डेल फाई डेल एक्स इंटू आई कैप प्लस डेल फाई डेल वाई इंटू वाई जे कैप, इस तरीके से। So you can say it's a question of mathematics also, like from vector you can also say it's a question from fluid mechanics as well। लॉस इन पाइप्स जो है डिफरेंट मेजर माइनर सारे लॉसेस, नॉट ओनली अबाउट द लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, ऑब्वियसली वो तो आपको करना ही है, द टू फॉर्म्स एफएल वी स्क्वायर बाय 2 जीडी एंड एफएल क्यू स्क्वायर बाय 12.1 डी टू द पावर 5, बोथ द फॉर्म्स, एंड सीरीज में रहते हैं तो द फ्लो रिमेन्स कांस्टेंट, इन पैरेलल द हेड लॉस रिमेन्स कांस्टेंट। ये सब जो छोटी छोटी कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, बट अलोंग विद दैट आल्सो द माइनर लॉसेस एटसेट्रा, दैट के वी स्क्वायर बाय 2 जीज। Also the Manning's equation, the application of the Manning's equation in different parts, it may be in environmental engineering, it may be in case of something else, but Manning's equation आपको रटा हुआ रहना चाहिए, that's the main thing। in OCF hydraulic jump बहुत अच्छे से पढ़ना, in hydraulic jump the specific energy calculation, the sequent depth calculation, the relation between y2 and y1, and also the energy loss, actually y2 minus y1 जो आप लिखते हो y2 minus y1 whole cube by 4 y1 y2, ये सब चीजें है। and also along with that the momentum equation y1 y2 into y1 plus y2 is equal to 2q square by g। तो इस तरीके से जो equations है, talking about your transportation engineering, there are tests on highway materials actually, from there you can get some 1 mark questions as well as some MSQ questions as well। SSD and OSD से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। सुपर एलिवेशन से you can get some really interesting questions, and definitely don't forget to know the actual formula of super elevation। सुपर एलिवेशन के जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है आपको वो पता होगा, E plus F by 1 minus EF is equal to V square by 2G। and if it's a numerical answer type question, don't just apply you know V square by 2GR and all these things। तो अगर मतलब है कि आपके इफ इट्स अ न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, ट्राई टू यूज दिस 2GR फॉर्मेट ओनली, डोंट ट्राई टू अप्लाई दिस 127R एंड ऑल दिस थिंग्स एंड ऑल दिस स्टफ। सॉरी, V स्क्वायर बाई GR में क्या लिख रहा हूँ सर, मेरा भी दिमाग खराब हो गया। फाइन, so this particular things, तो ये actual format। now E and F they are suppose very small, E and F the product, then we normally neglect with it with respect to 1, but इस चीज को दिमाग में रखना। speed density capacity relation that you all know, but इसमें वो खेलते हैं कभी कभी
they may not give you always the speed density relation to be linear, they will give you something else. तो उस हिसाब से आपको मैक्सिमम कैपेसिटी वगैरह निकालना होता है. एप्लीकेशन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज इन द कैलकुलेशन ऑफ टाइम, हेडवेज एंड स्टफ. एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग जो है अच्छे से पढ़ के जाना, especially the correction parts, as well as to finding out the radius of the taxiway. वहाँ पे 125 लेते instead of 127. And the reference temperature and all this, ये तो आप जानते हो correction के अंदर ही आ जाता है. Talking about your irrigation engineering, PWP and F's related question, that is permanent filtering, point and field capacity related जितने सारे questions है जो मैंने करवाया actually definitely in my courses. So there from you can get this particular thing. PWP and FC रिलेटेड मैंने दो कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, जो लोग मेरे क्लास कर चुके हैं, कोकोनट कॉन्सेप्ट एंड बैटरी कॉन्सेप्ट, जिससे सारे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. सो डेफिनेटली दैट थिंग. ड्यूटी डेल्टा बेस पीरियड, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. फोर्स ऑन ग्रेविटी डैम, बहुत सारे फोर्सेस है बेसिकली ग्रेविटी डैम के ऊपर, बट एटलीस्ट द कैलकुलेशन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एंड द अपलिफ्ट फोर्स यू मस्ट डू. टॉकिंग अबाउट योर सर्वेइंग हुज एक्सपेक्टेड इज अराउंड 5 मार्क्स गाइस. तो उनमें से जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखा बहुत इंटरेस्टिंग सा है. पहले तो फोटोग्रामेट्री, जो एरियल फोटोग्रामेट्री देख लेना उसके बारे में. कंपास सर्विंग, इसमें लोकल अट्रैक्शन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, जिस क्वेश्चन में इन्वॉल्व है डेफिनेटली देख लेना. लैटिट्यूड एंड डिपार्चर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस, स्पेशली आई वुड से द closing error based questions guys. Closing error based questions, what is it? That is summation of latitude square plus summation of departure square का root over that particular thing, उसका direction and magnitude. Error and accuracy का चैप्टर है, इसमें weight analysis, that if x का weight इतना, y का weight इतना, x plus y का weight कितना, 1 by x plus 1 by y का weight कितना, something like that. And also the error and accuracy other questions. Leveling में from this particular relationship, summation of, आप जानते होंगे ये चीजें, right? That summation of backside minus summation of foresight is equal to last RL minus first RL, and that is also equal to summation of rise minus summation of fall. तो इस सब इस equation के ऊपर definitely you can get some question. Talking about your steel structure, definitely उसमें plastic analysis is the most important chapter. उसमें जितने सारे चीजें you have to notice that maybe the internal work done, external work done method is equal to, and also some of the standard results of the collapse load, and also the eccentric connections. Talking about your RCC, moment of resistance, तो आप तो जानते हो moment of resistance normally आप जानते हो like 0.362 FCK XU into B into D minus 0.42 XU, but they will change the stress diagram, they will change the strain diagram, something like that. They will give that the strain maximum permissible is not 0.0035, they will give something else, say it is limited to 0.0025 or something like that. तो इस तरीके से वो खेलते हैं कभी कभी, या फिर स्ट्रेस डायग्राम वो बदल देंगे, कुछ कुछ दूसरा कर देंगे, दे विल गिव लीनियर स्ट्रेस डायग्राम. सो डोंट ब्लाइंडली यूज दैट. समझना कि क्या हम करते हैं. फर्स्टली वी कैलकुलेट द न्यूट्रल एक्सिस कंसीडरिंग c इज इक्वल टू t, एंड आफ्टर दैट वी कैलकुलेट द मोमेंट बाय डूइंग फोर्स इनटू लीवर आर्म. ये कॉन्सेप्ट को याद रखना. डेवलपमेंट लेंथ जो है फॉर्मूला उसके जरिए करना, बट रिमेंबर वो HYSD बार के लिए 60% ज्यादा होता है, एंड ऑल दिस थिंग्स. एसेंट्रिसिटी एंड कंप्रेशन मेंबर्स, मिनिमम एसेंट्रिसिटी कितना होना चाहिए इन द कॉलम्स एंड स्टफ. PSC में, दैट इज योर प्रीस्ट्रेस कंक्रीट में, स्ट्रेस एट द टॉप एंड बॉटम आप जानते होंगे, P बाई ए टॉप में प्लस M बाई जेड माइनस P बाई जेड, नीचे होगा P बाई ए नीचे तो माइनस M बाई जेड, M बाई जेड माइनस है तो प्लस हो जाएगा P बाई जेड, राइट. एंड लॉसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो लॉसेस है, लाइक फ्रिक्शन लॉसेस and anchorage, sleep, and all these things. So talking about your SOM, whose experiment is around your 5 marks. So axial deflection, like PL by A तो ये आप जानते ही है, but for different types of bars, like tapered bars and all these things, तो उसमें क्या क्या होता है, different जो values actually, right? मैंने आपको बोला था, that is your PL by pi by 4 D1 D2 into ही होता है for tapered bars के लिए. Spring based जो questions होते हैं, right? It may be to find out the deflection, right, and mainly जो आपको पूछते हैं, that is to find out the stiffness coefficient or vice versa. Mole circle नहीं होता है sir, wrong typing, sorry. More circle based questions, they may ask you actually direct the radius of the Mohr circle, या फिर they will give you, they will ask you the sigma 1 sigma 2, या फिर the maximum tau xy directly they can ask, something like that. एंड ऑल्सो द डिफ्लेक्शन इन बीम्स के जो जितने सारे फॉर्मूला है कंठस्थ होना चाहिए. हाइड्रोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो प्रेसिपिटेशन से मेनली द
मिसिंग रेनफॉल जो क्वेश्चंस एक्चुअली मिसिंग रेनफॉल डेटा एंड ऑल दिस थिंग्स, वो एक बार देख लेना. हाइड्रोग्राफ, unit hydrograph and S curve, that's very very important. I mean, how to obtain a unit hydrograph actually, say say 2 hour flood hydrograph is given, from there you are calculating 6 hour unit hydrograph, कैसे आप कैलकुलेट करोगे, so that particular things. and S curve. ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो डिस्चार्ज थ्रू एक्वीफर, एक्वीफर मतलब बेसिकली अनकॉन्फाइंड एक्वीफर, कन्फाइंड में उसमें से कितना कितना what is the maximum amount that can be tapped, right? The discharge and all these things, drawdown etc will be given, and also specific and specific retention based questions जो है, and also depending upon the relationship that SY plus SR is equal to porosity. Talking about again one of the big subjects, huge subject, that is your environmental engineering, whose weightage is around 9 to 10 marks this year. Air pollution is going to be a important chapter. जितने सारे कॉन्सेप्ट हमने कवर किए वो सारे आपको देखना पड़ेगा. छोटा चैप्टर है, MSW का भी. ये दोनों चैप्टर नॉर्मल लोग निगलेक्ट करते हैं, बट क्वेश्चन आएगा. टॉकिंग अबाउट योर SOR concept, that is surface overflow rate concept. From there definitely you are going to expect some question, that is your SOR, surface overflow rate. इससे like efficiency is equal to VS, right? That is the actual settling velocity by SOR into 100%. And the Stokes law, the application of that actually, कब Stokes law use होता है, कब Newton's law use होता है, and all this stuff. Filtration में concept of backwash मतलब क्या, मतलब बैक वॉशिंग जो करते हैं ना उस टाइम, मतलब फिल्ट्रेशन रेट एंड बैक वॉशिंग रेट दोनों मिलाते हुए जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो एक बार देख लेना. एंड बीओडी के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है डेफिनेटली एक बार देख लेना. सो दैट्स ऑल एक्चुअली फॉर टुडे. दिस आर द courses actually, these are the subjects which, these are the topics rather, which you definitely should emphasis on. But now let's talk about what are the particular courses actually जहां पे आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस मिलने वाला है. सो द फर्स्ट course is kept actually over here, that is your GATE 2023 only math plus aptitude rank up batch, जो कि classes चल रहा है, live classes as well as your recorded classes if you are missing the live classes, as well as the classroom PDFs, whose cost is around 1799 only. GATE 2023 सिविल इंजीनियरिंग कॉम्बो कोर्स, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग प्लस मैथ आपकी दोनों चीजें मिल रहा है, whose validity is definitely up to GATE 2023 4499, and you can obviously extend that validity later with the help of the payment sum. नेक्स्ट जो है GATE 2023 सिविल इंजीनियरिंग प्लस मैथ एप्टी प्लस ES कॉम्बो, जो कि दोनों पेपर दे रहे हैं, whose available is only at 5999. GATE 2023 एनवायरमेंटल साइंस जो सेकंड पेपर दे रहे प्लस मैथ एप्टी. एंड द लेटेस्ट कोर्स जो अभी के सबसे बेहतरीन कोर्स, अभी जो लोग कम पढ़ के ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए, दैट इज 60 मार्क्स कोर्स. GATE 2023 सिविल 60 मार्क्स कोर्स. अब ये 60 मार्क्स कोर्स क्या होता है? 60 मार्क्स कोर्स में क्या क्या होता है एक्चुअली? दैट इज योर मैथ, दैट इज योर एप्टी, एनवायरमेंट, जियोटेक एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग. ट्रांसपोर्टेशन मींस हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, ये तीनों ही चीजें. सो इफ यू कंसीडर द मार्क्स ऑफ इट टोटल, दिस इज 28 फिक्स्ड. एनवायरमेंट, जियोटेक अराउंड अगर मैं मानता हूं 14 प्लस 10 अराउंड 24 मान लेते. एंड ट्रांसपोर्टेशन, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, तीनों मिला के तो 10 मार्क्स आने ही है. सो if you just combine this thing, it's going to be little over 60 marks. So that's why I'm considering it as a 60 marks course whose price is around your 3299. But actually till your 30th of this particular month, introductory price that is 2999 में ये कोर्स आपको मिल जाएगा. Civil 60 marks course, you are going to get it at 2999 for the introductory price actually till 30th of November. इन पे कैसे ज्वाइन करना है? very simple. That is, you will find a Google form which is in the description of this video, in the pinned comment of this video, as well as in my Telegram channel. सब जगह में आपको मिल जाएगा ये Google form. Just you have to join over there, बस register कर देना है. After that our team will contact with you and you are definitely going to enjoy this course. सारे के सारे concept through most expected questions बहुत सारे हैं उसमें. और वहीं से यहाँ पे तो मैंने सिर्फ कुछ टॉपिक्स, आपको चंद टॉपिक्स बोला है, 50 जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स. वहां पे आपको सारे के सारे जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है हर टॉपिक से वो डिस्कस किया गया है. एवरीथिंग इन डिटेल. लाइव क्लासेस इफ यू कैन अटेंड वेरी गुड, रिकॉर्डेड तो है ही सारे के सारे, प्लस 60 मार्क्स कोर्स के सारे आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा, प्लस यू आर गोइंग टू गेट द क्लासरूम पीडीएफ्स एज वेल.
विच यू कैन एक्सेस एनी टाइम, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, कोई ऐसे टाइम लिमिट नहीं है। दैट्स ऑल एक्चुअली। आपको एक्सपेक्टेड टॉपिक भी बता दिया, एक्सपेक्टेड सोर्स भी बता दिया। भैया एक लाइक तो बनता है, फटाफट लाइक कर दो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो। टेक देन, स्टे सेफ, टेक